दोस्तों, मेरा नाम दिनेश है। I was born in Nepal, but now I live in Australia. मेरी हिंदी परफेक्ट नहीं है, पर दिल से बोलता हूँ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, एक सपने की है। What you are about to see is not an ordinary trip. एक ऐसा सफर है जो शायद किसी नेपाली या भारतीय ने अब तक नहीं किया। मेरा सपना है अपनी कार को ऑस्ट्रेलिया से यूके भेजना और यूरोप और एशिया की सड़कों से होकर दुनिया घूमना। और इस अनबिलीवेबल जर्नी की शुरुआत हो रही है इंडोनेशिया से, द ब्यूटीफुल आइलैंड ऑफ बाली। बाली को लैंड ऑफ गॉड्स कहा जाता है। यहाँ की मंदिर, संस्कृति और समुद्र तट सब कुछ जादू जैसा है। इंडोनेशिया में करीब 17,000 आइलैंड्स है और उनमें से सबसे फेमस और टूरिस्ट फ्रेंडली है यही बाली। पहले दिन मैं ठहरा हूँ कुता में, एक लाइवली जगह जहाँ सर्फर्स की एनर्जी और नाइट लाइफ की संगीत हर कोने में गूंजता है। यहाँ का कुता बीच बहुत फेमस है। लंबा गोल्डन सैंड, समुद्र की लहरें और ब्रेथटेकिंग सनसेट्स। पहले दिन में मैंने बस इस जगह को फील किया। लोकल कैफे में काफ़ी, समुद्र किनारे, सनसेट और लोगों की मुस्कानें। दूसरे दिन मेरी जर्नी हुई नुसा पेनिडा आइलैंड की ओर। यह कुता से बोट में लगभग 45 मिनट की दूरी पर है और बिलीव मी, इट्स क्लीनर, calmer and more peaceful than कुता। यहाँ की पानी क्रिस्टल क्लियर है और हर कॉर्नर फोटो और वीडियो के लिए परफेक्ट बैकड्रॉप देता है। मैंने एक लोकल टूर कंपनी से वन डे टूर बुक किया। होटल के बाहर ही कई टूर डिस्क मिलते हैं और होटल भी एनएस कर देता है। This place called Angel Bilabong. Angel Belabang. Yeah, and my name is Tapis. Papes. Yeah. Papes, Dinesh. Yeah, nice to meet you, brother. Same here, man. Yeah. It's good. It's a nice place. It's Yeah. beautiful, hey? So after this, we're going to Broken Beach. Yeah. Broken Beach, we need to walking there. Oh, Broken Beach. Yes, Yeah. yes. It's nice. It's more better. Yeah. And then after that, we're going to Kelingking Beach. Kelingking Beach after Yes. that. Okay. And then the Lots last of beaches. And then the last Crystal Bay. You can swim to Crystal Bay. I need to buy shorts. I've got no Oh, yeah, shorts. you can buy short at the Crystal Bay. You have sure, shop sure. that there. No worries, brother. Thanks, man. Yeah. Guides were friendly and took us to these truly picturesque spots. कोरोना के समय बाली की बहुत कठिन वक्त देखना पड़ा। लगभग हर परिवार की कोई न कोई मेंबर टूरिज्म से जुड़ा था, लेकिन अब आइलैंड फिर से जिंदा है और मुस्कुरा रहा है। यहाँ की सबसे मशहूर स्पॉट है केलिंकिंग बीच। व्यू पॉइंट डायनासोर शेप क्लिफ की तरह दिखता है। So let's see some beautiful drone footage from Kelingking Beach. So this is the beach. You can swim here. इसके बाद हम आ गए हैं डायमंड बीच पे, जहाँ की पानी लिटरली डायमंड ब्लू है। यहाँ मैंने बहुत अच्छा स्विम किया, वेव्स के साथ खेला। One of the best swims of my life, of my journey. शाम को बोट से वापस लौटते समय म्यूजिक चल रहा था और मैंने एक बियर ली। कूल ब्रिज के साथ यादगार। This place. I don't know how to spell it. Hey. Yeah, hi. This is my friend from China. It's Yeah. amazing, right? Oh, Jack. Good Jack. conversation. Yes, we're having a good time there. Yes. So I'll remember you, and then I come to Beijing. Beijing. I'm gonna text you. I'm gonna email you, and then we're gonna be in. I will be your guide. Travel. Yes, you'll be my guide. Yeah, I will For be- free, we got time. For free, of course. Oh, okay. I'm like, oh no, you got costume. Like, oh shit. Okay.
go. Right. तीसरे दिन में पहुंचा बैलेंस के कल्चरल हाट उबुद में. This is where we come for the dancing? Yeah. How was COVID for you guys? Oh, for the COVID one is 2.5 years. We have no job. We work in the rice field. Oh, yeah? And then we, because we already 30 years, we're not going to rice field. Yep. So we working for 6 months. So when in the 2 o'clock in the afternoon, so because really, really hot from the water, from the powder, hot from the sun. Yep. And people already 12 mother lady, they waiting, bring the basket. They want put the new rice. Yep. But my polder not finished yet, so I have been to rice. And then after that, my headache, and it got my like a drum. My headache like, Yep. oh my god! And then we quickly going to the grass, sit there, Yeah. because we don't want 12 mother they kick me about we pull down on the rice field. So you worked in the rice field in COVID, during COVID times? Yeah, we work in the rice field because nothing job, No job? nothing, no gas, nothing. Yeah, no people coming in here. People, no light, nothing. And in Kuta, when I pass at like 7 o'clock in the evening, Yep. no lighting, no one on the street. Oh, No one very, else. very, very scary, very scary. Very scared. No tourist. No, nothing, nothing open. No restaurant, nothing, no tourist. No one walk in the street. You know, in the front of your hotel, really, really quiet. No one. At 7 o'clock. Oh, wow. In the evening. Yeah. And now it's like pretty busy till 12 o'clock at night. Yeah, very busy. And before COVID in Legian, you know, like in the bomb one, in Legian. So, very, very busy. Sometimes they until morning. यहाँ कला मंदिर और नेचर का सुंदर मेल है. सबसे पहले मैंने देखा ट्रेडिशनल बाली डांस परफॉर्मेंस. यह डांस एक पौराणिक कहानी कहता है जो हमारे हिंदू गॉड्स और डेमन्स से जुड़ी है. देखकर लगा जैसे हमारी संस्कृति में ही जीवित है. इसके बाद मैं गया वर्ल्ड फेमस बाली स्विंग जो टेगलांग राइस टेरेस के पास है. यहाँ लोग ट्रेडिशनल ड्रेस रेंट करके डिफरेंट स्विंग्स पर फोटो लेते हैं. लॉट्स ऑफ नेपाली एंड इंडियन ट्रैवलर्स भी यहाँ आते हैं क्योंकि यह इंस्टाग्राम पर बहुत फेमस स्पॉट है. फिर हम गए टीटा एम्पुल टेम्पल जहाँ लोग इस पवित्र स्प्रिंग वाटर में स्नान करते हैं. पीपल बिलीव कि यहाँ नहाने से पाप धुल जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है. यहाँ का माहौल बहुत शांत और डिवाइन है. Oh, yes. Big spring from the It's coming from the spring, yeah. Yeah. But त्यहाँ मुनिबाट पानी Already 1,000 years never stop. 1000 years. Yeah, 1000 वर्षदेखि we have no रोकेको छैन अरे. Wow. we have no beach place by here, but the water still go up, Go, go yeah. up, go up. And there's fish in there as well. Yeah, they get fish as well. But only special only people can go in here for cleaning sometime with the white clothes like this. We call pemangku like Brahman. Brahman can go. Brahman. Yeah. Like Pandit. Yeah, Pandits, they can go and clean. Otherwise, no So one we can go got in. one big one. One, Yeah. 2, 3, Three. 4, 4. 5. Ah. Many small ones. Never stop. Never, the water just keeps on coming Yeah. from This inside. is from the Indra God. Yeah. Yeah, Indra They goes. shoot it down, come up the water, Yeah. holy water until now. Okay. This is like medicine because people do many drink lot of poison. Yep. And drink this one is to be well. Oh, and they should get well. Okay. What did they ask? और अब मेरी बाली यात्रा की आखिरी दिन. I decided to visit one of the most iconic landmarks of Bali, the GWK Vishnu Temple, जिसे लोग विष्णु टेम्पल या ईगल स्टैचू प्लेस भी कहते हैं. यहाँ विशाल गरुड़ा
पे बैठे भगवान विष्णु की 120 मीटर ऊंचाई प्रतिमा है, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक। अनफॉर्चुनेटली जब मैं यहाँ पहुंचा तो टेम्पल के दरवाजे बंद थे। यहाँ सुबह 9 बजे के बाद खुलता है और मुझे इस समय तक एयरपोर्ट के लिए निकलना था। So I decided to fly my drone instead. And here are some beautiful aerial footage of this incredible statue and art. इसके बाद मैं गया मेलास्टी बीच, जो बिल्कुल पोस्टकार्ड जैसी जगह है। यहाँ का टर्कोइज वाटर, ऊंची क्लिप्स और साफ रोड सीन्स बहुत सिनेमैटिक है। देखिए ये ड्रोन फुटेज, इतना सुंदर नज़ारा शायद ही कहीं और मिले। यहाँ आसपास कई एक्सपेंसिव होटल्स और लग्जरी बंगलोज हैं, जहाँ दुनिया भर के रिच ट्रैवलर्स रहते हैं। और अब फाइनली मैं पहुंचा गया एयरपोर्ट पर, heading towards my next destination. From Bali, I'm flying to Nepal for some mountain treks before continuing my grand overland journey to Dubai and beyond. So friends, ये थी मेरी बाली की यात्रा, from beaches of Kuta to cliffs of Nusa Penida, the culture of Ubud and the divine beauty of Garuda and Melasti Beach. This was just the beginning of my once-in-a-lifetime road trip from Australia to the UK and drag the car in Europe and Asia. अगले एपिसोड्स में मिलेंगे नए देशों, नई सड़कों और नए एडवेंचर्स के साथ. So stay tuned and let's keep traveling together.